until unless you really want to do it, don't do it, right? कि like इंडिया में ना वो चलता है, एक वेव चलती है, पहले इंजीनियरिंग की वेव थी, so everybody was becoming an अभी engineer. स्टार्टअप किया है। Then MBA का वेव था, everybody was becoming doing MBA. Then उसके बाद हमारा शार्क टैंक आने के बाद स्टार्टअप का वेव चला है. So just don't do it because everybody else is doing it, right? Do it because you believe in it, you are motivated to do it, and you are passionate to do it. So this is what I would summarize and say. अच्छा, आप इंडियन मार्केट के बारे में क्या समझे हो, लाइक अपने एक्सपीरियंस से, उसके बारे में कुछ बताओ। See, Indian market के बारे में I understand that people are looking for products जो worth हो, worth in the sense they are ready to spend. कि महंगे products भी हैं तो then that's okay, but then उनको ना उसकी worth मिलनी चाहिए, that it should work. If they are Yeah. spending 1,000 rupees on a serum, that serum should work on their skin. So hello everyone, today's podcast is really special. Today we have Kanika Vats, founder of CosIQ brand. So हम बहुत सारी बातें करेंगे CosIQ के बारे में, कनिका की जर्नी के बारे में, शार्क टैंक के बारे में. So first of all, thank you so much Kanika for joining me here. I'm very excited. So let's talk about CosIQ के बारे में थोड़ा बताइए. And how did you and Angat decided to start your skincare brand CosIQ? Okay, so up now though, it's very much evident, I've been talking about this every now and then, even Angad is talking about it every now and then. So couple of years ago I was working with a skincare company wherein I realized few gaps. That is I was actually working in skincare and product line only. So we were manufacturing products for many brands, many well-known brands as well, small brands as well. So at that point of time, I realized while working over there that there is a gap. That is, whatever the customer is paying, they are not getting the value of it. So brands were writing anything and everything on their labels. You might have seen that, it was 60% vitamin C, 70% vitamin C aate hain market mein. But actually they are not adding that kind of ingredients. So Okay. I went up to Angad, मेरी उनसे बात हुई that okay, this is the gap in the market wherein customers are paying for something that they are not getting. And also in the skincare market, no one's doing something revolutionary. No one's is actually doing, their own formulations. Everybody is either copying a international brand or, वही normal, natural, organic वाली बातें चल रही हैं. और ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में नहीं है जो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट हो, साइंटिफिकली बैक्ड हो. सो अंगद को भी आइडिया अच्छा लगा. सो वी डिसाइडेड टू स्टार्ट ऑन विद CosIQ. एंड दैट इज व्हाई आप हमारे प्रोडक्ट्स देखोगे तो उसके अंदर दे आर इन हाउस फॉर्मुलेटेड एंड वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट ऑन आवर लेबल. अगर हम 23% डाल रहे हैं किसी चीज में तो हम 23% डाल रहे हैं. एंड देन हमारा सनस्क्रीन जो है वो सीरम फॉर्म में आता है, which Yeah. is our one of the hero products. So it comes in a serum form. We were very first one to do it in India. Yeah. So once you apply it, there will be no white cast, there will be nothing, and we've not copied anything. So that is something which is the base of our manufacturing and everything, that we won't copy anyone. We'll be very clear with our labels. We'll provide ingredients and the products which are scientifically backed. So all of our products have ingredients which have scientifically backed certifications, or they are scientifically proven. ओके ओके, ऑसम. सो जैसे कि आपने बताया कि आप पहले कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम कर चुकी थी, Skincare. स्किन केयर. ओके. सो हाउ डिड यू अप्लाई योर प्रीवियस नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इनटू CosIQ? See, previous knowledge and experience का तो ये रहता है that whatever we were going through, like के formulations वगैरह कैसे होती हैं, how do you Okay. decide on some products, so वो वाला knowledge आता है. Then obviously Angad is the one who actually heads the labeling and everything. So he's the one who makes the labels. So the colors and all, everything is decided by him. But then obviously वो चलता है. We have that if okay, this will be the colors that we'll be using, or these are the ingredients that we should be using. तो वो सब कुछ amalgamate होके, discussions होके, so उसके अंदर obviously role पूरा रहता है.
but I am like, taking care of the business wala part. So that is where the experience and everything also comes in. Okay, okay. So, I wanted to ask you, what are the initial challenges you have to face while starting your brand? Since formulating the right skincare brand can be quite challenging. So, what do you think? See, starting anything is a challenge, True. right? Right from quitting your job, which is, paying you every month, and then starting something of your own, which will not pay you anything initially, right? So initially, everything you got to do it on your own. So Yeah. initial challenge तो वही होता है, but then uh, we were lucky enough to be vertically aligned with our sister concern, which is जो manufacturers हैं हमारे, Mm. they have also come in with us. They have also joined hands. So it was of great help. Initial challenges were met because our अब एक नई कंपनी सेटअप करते हो तो R&D का पैसा कहाँ से लाओगे? So Yeah. we were like lucky enough to vertically aligned by him, and we had access to the R&D. तो Okay. R&D lab में जब access होता है, and we because he's a manufacturer, उनके links हैं from to the this thing to the ingredients companies. So we got best of the ingredient companies, best of the ingredients. कोई भी ingredient market में आता है, so we have the access to it to do our R&D, whatever experiments हमको करने हैं. That's a little easier for us. So ये वाले challenges होते हैं because जहाँ पे मैं when I was working there earlier, so we talked to them only, and they happened to be very nice people, I would say, that they were gracious enough to let us use their R&D lab without any charges. Hmm. So that is one thing. So it then होता है पैसे कहाँ से आएंगे काम करने के लिए. So ये सारे initial challenges होते हैं that you need to work upon, and once you work upon these, obviously सारी चीजें काम कर जाती है फिर. आप इससे पहले कहाँ काम कर रहे थे? इससे पहले मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ही काम कर रही थी. I don't know whether I can take the name or not. You can take the name. So it was like RI Ayurveda manufacturing करके है. So I was working there. Okay, okay, awesome. So, my next question is, what is the differentiating factor between your brand and other similar skincare brands such as Minimalist, Derma Co, etc.? Oh, we are the best. I know. Okay. So see, the basic difference is उनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, हमारे पास थोड़ा कम पैसा है. But then, okay, मजाक की बात अलग. See, Minimalist is doing amazing, right? Yeah. The way they have captured the market, the way they have been reaching out to the customers, they are doing an amazing job, I would say, right? I don't think so कि what जो उन्होंने इतने कम टाइम में कर दिया, एक तरीके से दे हैव ओपन द स्किन केयर गेट्स फॉर अस एज वेल, क्योंकि Yeah. उनसे पहले वो सारा नेचुरल आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक वाली बातें हो रही थी, एंड दे वर द फर्स्ट वंस. उनके पास एक फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज भी है. True. सो दे वर द फर्स्ट वंस टू लॉन्च. एक इनिशियल जो गेट्स ओपन होते हैं स्किन केयर के इन केमिकल बेस्ड और मॉलिक्यूल बेस्ड स्किन केयर, वो उन्होंने ही किया, राइट? सो एंड हम लोग डिफरेंट इसलिए हैं बिकॉज एक तो आई इनिशियली टोल्ड यू दैट वी आर नॉट कॉपिंग एनी इंटरनेशनल ब्रांड्स. आई एम नॉट सेइंग दैट somebody is copying them. I'm not taking names. So we are not copying any international brand. You pick any of our formulation, वो आपको किसी से मैच करते हुए नहीं दिखेंगे, right? And we are very much transparent. So whatever we are adding, we are mentioning it. हम अपनी formulations कर रहे हैं. We have every ingredient which is scientifically backed, and we are trying to. We don't want to be a push brand, हम लोग नहीं चाहते कि हम एक बार ही कस्टमर हमारा सामान खरीदे एंड उसके बाद वो बोले अच्छा नहीं समझ आया दोबारा नहीं खरीदेंगे. सो वी वांट टू बी अ ब्रांड व्हिच इज बेसिकली अ पुल ब्रांड, जो कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचे एंड देन उनको नॉलेज इम्पार्ट करे कि ओके ये ऐसे आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं, एंड ताकि हम उनकी जर्नी का पार्ट बन सके. तो बेसिक Okay. डिफरेंस यही है. Okay, okay, awesome. So, my next question is, during pandemic years, people started to invest more in self-care and skincare. So, was that also a beneficial factor for your brand? See, उस टाइम पे I actually did not think much about it
but then yes, like it's good for our industry as well that people have started investing in themselves. Initially सिर्फ self care क्या होता था, hitting a gym, Yeah. right, wherein बस body बनानी है, यही सब करना है. Skin care was just limited to एक strata में limited था, wherein there was very limited people who would actually go ahead and do skin care or apply serums on their faces. But now like I would say that even males are entering this you know uh, this target market जिसे हम कहते हैं. So even males are entering it. So I think that is a good thing that happened during pandemic, that most of the people started taking care of their skin, they started taking care of their health, and so on. Okay. So my next question is Shark Tank का experience कैसा रहा, और how has Shark Tank impacted the overall response, and how did you manage expanding after the reach of CosIQ increased? Like pre Shark Tank और post Shark Tank के बाद क्या क्या changes आए numbers में और response में? See, pre-Shark Tank and post-Shark Tank obviously change तो है. The kind of marketing and kind of eyeballs that you get when once you are on a national television. Yeah. And I remember उस टाइम पे Shark Tank जो है KBC के slot में आ रहा था. Okay. Right, so KBC खत्म हुआ था and उसके बाद immediately बाद ही Shark Tank शुरू हो गया था same time slot. So the kind of people that you get at that point of time वो बहुत ज्यादा है. Shark Tank से पहले obviously there were बहुत limited people हमको जानते थे. But then Shark Tank के बाद बहुत like एक तरीके से रीच बहुत ज्यादा बढ़ गई, बिकॉज लोगों को पता चल गया एंड like कि CosIQ है. There were people who would want to go ahead and associate themselves with us. Then obviously sales and numbers में भी फर्क पड़ा. Like we were कितना? just doing काफी. Okay. So after Shark Tank, we like at that point of time we were just 4 months old. And for a company to come on a national television with just a span of 4.5 months, so बहुत ज्यादा impact करता है. तो उस टाइम पे I remember we went out of stock at for about couple of months after that, cause हमारा forecasting ही गलत हो गया, cause क्योंकि पता नहीं था कि response क्या होगा, किस तरीके से होगा. हमने अपनी तरफ से maximum इंतजाम करके रखे थे, but then obviously response was बहुत ज्यादा हम लोगों के एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा था. सो क्योंकि आई वुड से जो हमारी कंट्री की जनता है उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से शार्क टैंक को एक्सेप्ट किया. उन्होंने ट्रस्ट दिखाया न्यू कंपनीज पे, जो भी न्यू कंपनीज वहां आई थी. दे स्टार्टेड परचेजिंग देयर प्रोडक्ट्स. सो उन्होंने भी ट्रस्ट दिखाया. आई वुड से ऑब्वियसली जैसे विनीता ने हमारे सनस्क्रीन के बारे में कहा था कि सनस्क्रीन अच्छा है, विटामिन सी भी जस्ट 2 इंग्रेडिएंट्स, एंड उसको स्टेबलाइज किया है हम लोगों ने. शेल्फ लाइफ भी अच्छी है. तो इवन शी वाज ऑब्वियसली, उनका बोलना के प्रोडक्ट अच्छा है एक तरीके से नेशनल टीवी पे सबके लिए वैलिडेशन भी हो गया था. सो दैट इज व्हाई आई वुड से दैट द रिस्पांस वाज ऑब्वियसली अमेजिंग. एंड वो सारा एक्सपीरियंस, वो जर्नी अभी तक चल रही है. सो वो क्योंकि लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं, आपके ब्रांड को जानना शुरू कर देते हैं, वो आपको भी एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं. पहले क्या होता था, लोगों के पास ना सिर्फ ब्रांड होता था, उनके साथ जो फेस एसोसिएटेड है वो काफी कम लोगों को पता चलता था. बट देन बिकॉज ऑफ शार्क टैंक एक ब्रांड को फेस मिल गया. ट्रू. तो अच्छा, शार्क टैंक की आपकी लर्निंग्स क्या कह रही शार्क टैंक में जाने से? और भी आप बहुत सारे फाउंडर से मिलोगे, तो उनसे मिलके आपकी क्या क्या लर्निंग्स रहे? लाइक मुझे पता है पूर्वा अभी रिसेंटली पूर्वा के साथ मेरा पॉडकास्ट मैंने कंप्लीट किया, तो उन्होंने आपके बारे में बताया कि हाँ यू बोथ आर फ्रेंड्स. तो उन्होंने बताया कि क्या क्या लर्निंग्स रही. तो आपकी क्या क्या लर्निंग्स रही शार्क टैंक में जाने से, वो बताइए. सी ऑब्वियसली पूर्वा इज अ वेरी गुड फ्रेंड. हम लोग शार्क टैंक पे नहीं मिले थे क्योंकि उनका शूटिंग शेड्यूल अलग था, मेरा शूटिंग शेड्यूल अलग था. बट देन लेटर ऑन वी गॉट टू नो के नेबर्स ही हैं एक तरीके से. सो अंगद के मैटरनल साइड में वो लोग नेबर्स हैं. सो एंड फैमिली नोज ईच अदर. बाद में ये भी पता चला था. तो बहुत सारी लर्निंग्स रही. पता चला पीपल आर ईगर टू हेल्प. ये सबसे बड़ी लर्निंग रही मेरे लिए, दैट यू नीड टू आस्क फॉर हेल्प एंड पीपल आर ईगर टू हेल्प यू आउट. तो ये एक मेन चीज होती है. जैसे हम लोग ना वी डोंट आस्क फॉर हेल्प, बट देन शार्क टैंक पे सारे एवरीबॉडी आई वुड से, एंड आई कैन वाउच फॉर इट. फॉर सीजन 1 सीजन 2 वालों को हम इतना नहीं जानते,
तो सीजन 1 में तो ऐसा है दैट एवरीबडी इज कीन. किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, यू कैन गो हेयर एंड टाइप इन, ओके कैन एनीबडी हेल्प मी आउट विद दिस स्पेसिफिक थिंग. So there are n number of people who are there to give you contacts, to connect you with people, to tell you like, okay, if you are facing this kind of hurdle, ये हो जाएगा. Yeah, Then true. हाँ, and उसके बाद सबसे बड़ी learning रही कि अपने there were people जो they would actually go ahead and be there for you, जो expectations नहीं थी. Yeah, And then उसके बाद यस, हाँ देखो, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ में काफी सारी चीजें होती हैं जो तब बदल जाती हैं एकदम से, वंस यू आर अ नोन फेस, या लाइक कुछ भी मतलब चीजें होती है तो लोग भी बदल जाते हैं, ये भी सीखा. देन yeah, obviously there were people who are putting their heart and soul into their work, तो probably एक मोटिवेशन भी मिलती है, एक वो भी मिलता है, एक अलग ही पर्सपेक्टिव भी मिलता है कि अच्छा ये भी हो सकता है. सो mm, इट एक्चुअली चेंजेस योर लाइफ, एंड एकदम से इतने सारे लोग एक साथ मिलना, yeah. वो पब्लिसिटी एक, का वो नहीं होता, हाँ, फेम का. नहीं पब्लिसिटी एंड फेम भी नहीं, बट वो जो होता है ना, ओके यू गॉट टू नो सो मेनी पीपल, देयर आर सो मेनी Hmm. पीपल. अब उनमें से ही कुछ कुछ हैं जो हु बिन बिगर नेम्स, Hmm. राइट, बट देन दे ऑल आर डाउन टू अर्थ. Hmm. So ये Yeah. चीज भी सीखी कि if you there are something which are going right in your way, or the way that you want them to be, don't let it go to your head. Hmm. So everyone there were very grounded, and there was a nice experience. Okay, awesome. So, I want to ask you, like you said in your pitch that CosIQ generated revenue of 11 lakhs in just 4 months of Right. starting. So, how did you strategize to generate such revenue at such an early age? See, हम लोगों का जो revenue था, that was for 3 months, Okay. right? So it was in total of 3 months का revenue, Hmm. and उसके जो लास्ट मंथ था उसमें हम लोगों ने 3.5 लाख किया था. एंड Hmm. जो करंट मंथ जब शूटिंग चल रही थी, उस मंथ वी वर अबाउट टू क्लोज एट 4.5 lakhs. Okay. सो तो 11 लाख का रेवेन्यू ऐसे था दैट वी स्टार्टेड, वी डिड नॉट स्पेंड एनीथिंग ऑन मार्केटिंग एज सच. हम Hmm. लोगों ने जो भी मार्केटिंग किया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग किया था, एंड उसमें भी वी डन बार्टर. वी डिड नॉट पे एनी ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स. सो Hmm. वी आस्क्ड देम टू रिव्यू आवर प्रोडक्ट्स. हम लोगों ने उन्हें कोई स्क्रिप्ट नहीं दी थी, कोई कुछ नहीं था. वी जस्ट आस्क्ड देम के नो यू लाइक आवर प्रोडक्ट्स, प्लीज रिव्यू अस, दैट्स इट. एंड रिव्यू भी वो Amazon वगैरह वाला रिव्यू नहीं, Hmm. रिव्यू इट ऑन Instagram. Okay. So because of that, people started liking our product, and we were very open with people. And initially तो यही था that me or Angad would sit on Instagram and talk with people. There was a personal touch as well, I would say. Okay. तो मार्केटिंग हमने ऐसे करी थी, एंड आई वुड से मेहनत थी कि हम लोगों ने वो 11 लाख रुपए करे. Okay, okay. So, I want to ask you, like in your pitch at Shark Tank, Aman said कि लड़ाइयाँ करवा दी आपने. So, how did you feel after listening to the offers? Was it overwhelming? सी फॉर मी इट वाज ओवरवेलमिंग, क्योंकि हम लोगों को, मेरे को नहीं लगा था कि वी विल गेट इवन वन ऑफर, राइट, Hmm. बट देयर वर कपल ऑफ देम. तो मेरे लिए तो काफी ओवरवेलमिंग था, बिकॉज हम लोगों का तो मतलब ये था कि पता मतलब आई वाज लाइक दिस के आई डोंट नो व्हाई आर वी सिलेक्टेड, बिकॉज पीपल ओवर देयर दे वर ऑलरेडी डूइंग करोर्स के रेवेन्यूज एंड एवरीथिंग, और दे वर टेक बैक्ड. सो उसके अंदर मुझको थोड़ा था, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि भाई एक भी ऑफर मिलेगा. एंड मुझको तो बस आई रिमेम्बर दिस थिंग, कि बस वो ना आंखों में आंसू थे, बस वो टपके नहीं. अच्छा, ये बताइए कि जब असनीर ने आपको एक सार की ऑफर दिया और हम्म. जो कि वैल्यूएशन ज्यादा थे उसकी, तो Right. उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था? लाइक क्यों आपने नहीं लिया? ठीक है, एक्सपर्टीज तो समझ में आ रहा है, पर उस टाइम आपके दिमाग में क्या चल रहा था? सी उस टाइम पे हमारे दिमाग में ये चल रहा था, एक तो उसके अंदर लाइक प्रोबेबली हमको थोड़ा सा कम ऑफर मिला है वहां पे, हम्म, विनीता एंड क्या कहते हैं, अनुपम. अनुपमा. बट the only thing that we we wanted to go with Vinita is Vinita was one of our top
most person whom we wanted to go ahead with it. And after that, it was Anupam. Hmm. So we were getting both of them. ये भी था. And if you see long run में ना इतना problematic नहीं होता है. And लॉन्ग रन में अगर आप देखो, लॉन्ग रन में लोग कहते हैं कि ज्यादा इक्विटी दे दी, ये कर दिया, वो कर दिया. बट देन लॉन्ग रन में ना आप देखोगे फाउंडर्स को फाउंडर्स के पास ना अबाउट 15 से 20% तक का इक्विटी रहता है. बिकॉज जैसे जैसे राउंड होते रहते हैं वो उसी रेशियो में डिवाइड होता रहता है. या ट्रू. सो एंड में जाके इतना फर्क नहीं पड़ता जब आप अच्छी वैल्यूएशन पे करते हो. बट देन इट्स ओके. देखो, कहने वाले लोग बातें करेंगे, राइट? एंड we wanted to work and we wanted to obviously like लोगों ने ये भी बोला okay Vinita will take you over. मतलब ये तो अच्छा है ना. हाँ. that even she is taking over, that means we are doing good, Hmm. right? And taking over does not always mean that you have to leave the company. Hmm. but ठीक है, like कुछ तो लोग कहेंगे, can't help. हाँ. ओके ओके. तो आप ये बताइए कि ऑन कैमरा विनीता और अनुपम के साथ जो एक्सपीरियंस था, ऑफ कैमरा कैसा रहा? ऑफ कैमरा भी इट्स ओके. मतलब ऐसा नहीं है दैट whenever they come online, जैसे वीडियो कॉल्स ही होती है बिकॉज वी आर नॉट इन बॉम्बे. वो दोनों बॉम्बे बेस्ड है, हम लोग इतना मिल नहीं पाते हैं. शार्क टैंक के बाद हम लोग अभी मिले भी नहीं है, बट हाँ वीडियो कॉल्स पे एंड ऑल वीडियो कॉलिंग होती है. इवन वी आर कनेक्टेड विद लाइक Kaushik comes on calls, Vinita's husband. हम्म. So, and whenever we need anything, we ask them. They are there to help. So, वहां पे भी वो वैसे ही थे जहाँ पे जैसे वो नॉर्मल है. आई ओके तो फाइंड इट क्वाइट नॉर्मल. हाँ. ओके. अच्छा ये बताइए कि जैसे धंधा आपका है, लाइक बिजनेस आपका है, बनाना आपको आपका बच्चा है, ठीक है? तो साक्स का कहाँ मेजर रोल आता है कि साक्स आपको कहाँ हेल्प करते हैं, उनका कहाँ रोल आता है? सी उन लोगों का ना बिन देयर डन दैट वाली बात है, हम्म. राइट? सो लाइक अगर विनीता को ले लें हम लोग, अभी कोई बात हुई थी वेर वी नीडेड सम हेल्प ऑन शॉपिफाई. So Anupam was like straight away he was like see इसके अंदर Vinita can help you out, and so Vinita will connect us with their CTO, हम्म. right? So ये चीज होती है. So now when they have already done that, so they know कि अच्छा हम लोगों को ये question है, probably we are stuck in this, so they go ahead and help us out with that, out us in that. But then again like we need to ask for it. अपने आप तो कोई आके कुछ नहीं करता है. हम्म. जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक उनको भी कैसे पता चलेगा कि ओके वी नीड हेल्प इन दिस. देन उसके बाद नेटवर्क होता है उनका, वेर इन द नेटवर्किंग कम्स इन पिक्चर. सो दे हैव बीन एक्टिव. ऐसा नहीं है कि लोग सो जाते हैं. दे आस्क फॉर थिंग्स के ओके व्हाट आर द सेल्स एंड एवरीथिंग ऑब्वियसली. बिकॉज एक तो लाइक व्हेन वी गिव देम 25%, एक चीज ये भी थी हमारे दिमाग में कि वो स्किन इन द गेम वाली बात हो जाती है. हम्म. जब एक अच्छा चंक होता है किसी के पास तो दे वुड वांट यू टू सक्सीड एज वेल. या ट्रू. ऐसा नहीं होगा कि अच्छा 1% ही है छोड़ो, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा. हम्म. वो वाली चीज नहीं होती, उसके इन द गेम वाली बात हो जाती. ओके ओके. पहले थोड़ा और बताइए मॉलिक्यूलर आपके जो जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में पहले थोड़ा और बताइए. ओके. सो हमारे पास राइट नाउ वी हैव अबाउट 27 SKUs. उसके ओके. अंदर हमारे सनस्क्रीन है which comes in a serum formula. That is, it's very light and you won't even get to know that okay you applied a sunscreen. हम्म. So it's very light, it leaves no white cast. It's a hybrid formula. So we've got vitamin C, which has like two ingredients, like vitamin C and the dissolvent. Then we've got niacinamide serum, which comes in three consistencies: 5%, 10%, and 20%. We've got retinol, which comes in again, it comes in two consistencies: 1% and 2%. But it also comes in squalene and emulsion. So if you have oily skin, you can use emulsion. If you've got dry skin, you can use the squalene based one. ओके. Then we've got peeling solutions, right? So जब हम scrub करते हैं ना, so we do use those walnut scrubs and all. So उससे क्या होता है जब थोड़ा ज्यादा हो जाता है तो rashes पड़ जाते हैं. So या. we've got peeling solutions. You can just apply it, leave it on for 10 minutes and wash it off. ओके. Then we've got face cleansers. So face cleansers में we've got again 5 types of face cleanser for normal skin, oily skin, dry skin. Then we've got exfoliation, AHA, BHA, and BHA as well. So we've got these face cleansers, and
We've also launched vitamin C serum, which comes with CEF, that vitamin C, vitamin E, and ferulic acid. So थोड़ी सी कंसिस्टेंसी उसकी अलग है हमारे दूसरे वाले विटामिन सी के लिए, क्योंकि हमारा विटामिन सी लोगों को थोड़ा सा ऑयली लगता है वो वाला. ओके सो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अलग है, इसका फॉर्मुलेशन थोड़ा अलग है. एंड then we've got couple of more products are there which are there in the pipeline. ओके And we've got moisturizers as well. Moisturizer में भी हम लोगों का, if you see the moisturizers, so हम लोग what we are doing in moisturizers is it comes with NMF, which is naturally moisturizing factor. ओके So हम लोग 15% में कर रहे हैं ये. So उसको लगाने से क्या होता है, एक तो it comes in an air gel formula. Again it's very light. Moisturizer आप लगाओगे आपको नहीं पता चलेगा that आपने moisturizer लगाया हुआ है. But then obviously the effects would be there. So once you apply our moisturizer, तो आपकी जो स्किन के नेचुरल मॉइस्चराइजिंग वाले फैक्टर्स होते हैं ना, वो उन्हीं को पुल करके आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. ओके राइट. सो एंड अगेन few products are there in the pipeline which we will be probably launching soon. ओके ओके अच्छा थोड़ा आई वांट टू आस्क यू थोड़ा फंड रेज के बारे में बताइए और थोड़ा बेसिक से बताइए लाइक जितनी भी ऑडियंस है वो जेनजीज है तो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो आप एकदम बेसिक से बताइए कि फंड रेज अगर किसी को करना है तो वो कैसे करे. सी फंड रेज के लिए ना आजकल बहुत सारे एवेन्यूज हैं. गवर्नमेंट ग्रांट्स हैं, देन बैंक्स के भी लोन्स वगैरह हैं इफ यू वांट टू गो इनटू द डेट वाला थिंग. So, and then there are many angel investors, there are many VCs which are there, and आजकल बहुत ज़्यादा approachable है क्योंकि सब कुछ online होता है. So everybody is very much approachable. So you can go there, you can submit your decks. Obviously deck जो pitch deck होता है, that is a presentation on or PPT. वो बनाना बहुत important है. You need to make sure that आप अपना idea सामने वाले को बहुत अच्छी तरह समझा रहे हो. Because until unless you are able to communicate your thinking, you won't be able to get funds. क्योंकि सामने वाला ना agree नहीं करेगा, वो you will not be able to convince that person. Right? और जब तक बंदा convince नहीं होगा, they won't either आपका idea amazingly like superb वाला out of the world वाला idea तो and again then वो भी आपको समझाना पड़ेगा. So Yeah. you need to be prepared for that. You need to be prepared with the numbers. You need to be prepared with everything, whether financials, whether marketing, whether production, or it's a service-based company, the services, whatever you are offering. You need to be very clear about it. And obviously, communication to chahiye hi chahiye. Then Yeah. you can, approach the VCs and all. They're ready to talk. Everybody is ready to talk. If, किसी भी VC पे जाओगे ना आप, there is a form on their website wherein you need to fill it up. And if they Yeah. like it, they'll get back to you. ओके आई वांट टू आस्क यू एक परफेक्ट पिच में क्या क्या होनी चाहिए जैसा कि आपने बताया. मुझे भी बता दो. If you get an answer, let me know. एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोग ऐसे पूछते रहते हैं तो इसलिए मैं थोड़ा और ज्यादा ब्रेक डाउन करके पूछना चाहता हूँ क्योंकि क्योंकि ए लॉट ऑफ ऑडियंस जो है वो जेनजीज है तो इसलिए मैं पूछ रहा था. See, as far as I know, a perfect pitch, there is no perfect, right? Perfect pitch के लिए मुझे नहीं पता. ट्रस्ट मी, अगर मुझे जिस दिन पता चल जाएगा perfect pitch क्या होती है, तुम्हें मेरी pitch वैसी ही मिलेगी. तुम्हारी pitch will be perfect. So, एक यही चीज you should be clear about your business. कि आप क्या कर रहे हो, where do you want to go, vision क्या है. So you need to be clear about it because बहुत सारे टाइम ना क्या होता है, हम अपने विजन में कंफ्यूज हो जाते हैं. So once we get True. confused in that, तो वो चीजें वहां पे ना क्योंकि हम किसी के सामने अगर प्रेजेंट कर रहे हैं तो ना उस टाइम पे हमारे दिमाग में सिर्फ वही चलना चाहिए. बट बीइंग ह्यूमन दिस हैपेंस कि उस टाइम पे भी ना हमारे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं. हाँ ट्रू. अच्छा आप इंडियन मार्केट के बारे में क्या समझे हो लाइक अपने एक्सपीरियंस से उसके बारे में कुछ बताओ. See, Indian market के बारे में I understand that people are looking for products जो worth हो. Worth in the sense they are ready to spend. कि महंगे products भी हैं तो then that's okay. But then उनको ना उसकी worth मिलनी चाहिए. That it should work. If they are Yeah. spending 1,000 rupees on a serum, that serum should work on their skin.
people are ready to take care of their skin. People are ready to take care of एक सनस्क्रीन जैसे आजकल शुरू हो गया है, पहले नहीं लोग लगाते थे ज्यादा, but then people are whenever they are going out they are applying sunscreens, they are applying serums. और ये जो है आई थिंक के मोस्टली ना इंडियन मार्केट दे आर रेडी टू एक्सेप्ट, एंड ये मेड इन इंडिया के बाद ना थोड़ा इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए भी जो है मार्केट बढ़ गई है. Yeah, true. आई वुड से लाइक वो ना थोड़ा सा एक एक्सेप्टेंस भी बढ़ गया है. सो ये चीज है इंडियन मार्केट में. एंड Okay. इंडियन मार्केट लाइक यू कैप्चर इंडियन मार्केट. आई थिंक एक बार आपने इंडियन मार्केट कैप्चर कर लिया ना ठीक हर तरीके से, यू जगह. डोंट नीड टू गो आउटसाइड. ओके ओके. सो आई वांट टू आस्क यू कि जैसे बिग नेम ब्रांड्स जो इस फील्ड में सिमिलर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो आप बना रहे हो, वो भी कम टाइम में. सो आप उसको कैसे टैकल कर रहे हो, क्योंकि उनके पास टीम भी ज़्यादा है, रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, तो आप उसको कैसे मैनेज करते हो एज ए यंग स्टार्टअप? सी हम लोग what we can do is we can make best of the products that we can, right? हम लोग उसके बारे में नॉलेज अच्छी तरीके से दे सकते हैं. अब बिग ब्रांड ऑब्वियसली उसी सेम चीज को रेप्लिकेट कर लेगा, बट देन probably they'll not be able to replicate what we are actually doing, क्योंकि वो एक्सपीरियंस. फॉर्मुलेशंस. हाँ, सी एक्सपीरियंस उनके पास ज्यादा है, हम्म. राइट? वो 20 साल 25 साल का बंदा हायर करके दे कैन एक्चुअली गेट इट एंड गेट द थिंग्स डन. बट देन द वे वी कम्युनिकेट विद पीपल, जो स्टार्टअप्स हैं, जो नो अपकमिंग ब्रांड्स हैं, जिस तरीके से हम लोग लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, probably big brands lack that. वो ना सेम लाइक you would see एक अगेन आई नॉट टेक नेम, सेरम, रेटिनॉल सेरम आया है, क्रीम आई है या सेरम आया है, आई डोंट रिमेम्बर. वो ऐड कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है. वो एड्स टेलीविजन पे ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे हैव दैट काइंड ऑफ मनी. तो उससे ऑब्वियसली उनका रीच तो बढ़ेगा, बट देन हमारे जो लॉयल कस्टमर्स बन जाएंगे ना, तो वंस वी मेक द पर्सन ट्रस्ट. टुवर्ड्स द ब्रांड, सो ऑब्वियसली थिंग्स विल बी गुड फॉर अस, क्योंकि फिर ना वर्ड ऑफ माउथ भी चलता है. हाँ. तो कल को अगर आपको कोई कहे कि अच्छा सूर्या ये यूज करके देख, राइट, ऑब्वियसली यू विल ट्रस्ट दैट पर्सन, क्योंकि मैंने यूज किया है तो तेरे लिए भी अच्छा होगा. यू गो ahead and use it, तो you'll obviously use it and you'll try it once, and once you like it again you will be the customer. तो हम लोगों की ट्रू. ना साइकिल वैसे चलती रहनी चाहिए. ऑब्वियसली बिग ब्रांड्स तो बेटर रेट्स पे प्रोवाइड कर सकते हैं, वो लोग बेटर पैकेजिंग प्रोवाइड कर सकते हैं. बट अगेन हमारी पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, अगेन आई वुड, बहुत अच्छी. हाँ. बिकॉज everything comes in a airless bottle right now. तो हमारा NMF, serums, sunscreen, they all come in uh, airless bottles, which and airless pump, and obviously pump on tube भी है हमारा. So it's easier to carry. Will and उसके अंदर airless formula है, तो oxidization नहीं होता, which is good for serum and moisturizers. ओके So ये ओके सारी चीजें हैं हमारी. ओके. ऑसम. तो कुछ महीने पहले कॉस आईक्यू पब्लिक हुआ था, सो दैट पीपल कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन कॉस आईक्यू. सो हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ पीपल एंड डिड कॉस आईक्यू अचीव इट्स गोल जो आपने सोचा था कम्युनिटी Yes, राउंड? at that point of time, people were very excited. We were getting numbers of messages and phone calls. Okay, this is happening. So we were like, yes, and we achieved about 300% of what we expected. ओके ओके. सो आई वांट टू आस्क यू कि ये बताइए कि अभी तक का एक्सपीरियंस जर्नी के कॉस आईक्यू के जर्नी से कैसा रहा, और आपने क्या क्या चीज़ें अगर समराइज करनी हो कॉस आईक्यू की जर्नी को एक स्टार्टअप बिल्ड करने की, तो आप क्या एक्सपीरियंस देना चाहोगे? जो लोग आपको देख रहे हैं वो बेसिकली 18 से 25 28 तक के लोग हैं, और वो लोग भी अगर खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, स्टार्टअप या कुछ भी, तो आप उनको अपने एक्सपीरियंस से क्या कहना चाहोगे? See, एक बहुत ही छोटी सी चीज है which I would want to share, and this is what I always say to the people who ask me, okay, हम लोग अगर अपना कुछ करना चाहते हैं तो क्या करें, कैसे करें, क्या करें. So I would say कि until unless you really want to do it, don't do it, right? कि like इंडिया में ना वो चलता है, एक वेव चलती है. पहले इंजीनियरिंग की वेव थी, so everybody was becoming an अभी engineer. स्टार्टअप किया. Then MBA का wave था, everybody was becoming doing MBA.
देन उसके बाद हमारा शार्क टैंक आने के बाद स्टार्टअप का वेव चला है. सो एंड सो जस्ट डोंट डू इट बिकॉज एवरीबडी एल्स इज डूइंग इट. Right? Do it because you believe in it, you are motivated to do it, and you are passionate to do it. So this is what I would summarize and say. Okay, okay. So that was the episode. I loved it, and thank you so much, Kanika, for joining me here. You you have tell a lot of things. तो जितने लोग भी देख रहे हैं उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा. आपने अपनी जर्नी समराइज की, CosIQ की, आपकी खुद की, अपनी लर्निंग्स बताई. So thank you so much for joining me here. Thank you for having me over. Thank you. So thank you so much guys for watching this episode. So stay tuned and subscribe to this channel for more amazing content like this. Don't forget to hit the like button and share this video with your friends. Also let me know whom you want to see as a next guest on the podcast.